बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम इंस्टाग्राम के एक बड़े इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो है शॉपिंग का। कि इंस्टाग्राम पे शॉपिंग का क्या ऑप्शन है, शॉपिंग कैसे करते हैं। सो ब्रांड्स आर नाउ एबल टू मोनेटाइज देयर इंस्टाग्राम फीड विद द कंटिन्यूअस शॉपिंग इंटीग्रेशन that Instagram is now revealing, and they are making shopping on the app more seamless than ever and further enhancing the user experience. And if your account meets Instagram requirement and you are approved to use the shopping feature on Instagram, then start adding tags to your product today. And how to make your feed shoppable? Go to your Instagram business profile, मेन्यू बटन जो अपर राइट कॉर्नर में होगा, सेटिंग में जाएं, टैप बिजनेस, टैप शॉपिंग एंड टैप प्रोडक्ट एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट एज वेल कैटलॉग प्रोडक्ट कैटलॉग you want to use with shopping on Instagram, or the shopping bag icon will indicate to user that it's a shoppable post, and they simply tap to find out more about the product. Once they click on a product, they will be brought to a page with more details, and then if ready to purchase, then they will purchase from the website. So be sure your first post grabs people attention so they continue to click more. And how brands are using shopping tags successively, आपने ये बहुत पहले भी नोट किया होगा कि one way to ensure people are clicking on your product is to make sure your posts are not boring, they are healthy, and they are engaging. So instead of basic flat lay of your product with a white background, make it engaging by using models, props, sceneries, and many other things. So you want to showcase your product in action so users can visualize themselves using it, and add product tags in story. This is very important. So create a new story for or a feed post. For Instagram feed post, tap tag product from the share screen. For stories, tap the sticker icon and then select the product sticker option as well, and select the product you want to tag from your catalog, and place your product tag or a sticker on or near the product you wish to tag. So share your post to story after that. And shopping channels on Explorer page. So Instagram released a category on Explore page dedicated to shopping. It's a curated feed of shoppable posts that you'll be interested in, based on the type of post you would frequently engage with, and this is an even further indication that Instagram is moving toward an Amazon-like shopping experience and shopping model. And Instagram continues to release new and innovative features. Make sure you update your account and take advantage of the changes. So sometimes change can be difficult to adapt to, but when it comes to Instagram, it is vital if you want to keep your audience and followers growing strong. So this was it about the shopping on Instagram. तो मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ऐड कैसे रन करते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं, IGTV क्या है, हाइलाइट्स क्या हैं, इसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं। सो इंस्टाग्राम की जो कंप्लीट एक पिक्चर सी क्रिएटिव कैसे होते हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अब होपफुली ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप इंस्टाग्राम को एक डिजिटल मार्केटर की तरह, सोशल मीडिया मार्केटर की तरह यूज़ करने के काबिल होंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिस करें। जब तक आपने खुद एक्सप्लोर नहीं की, it's quite difficult for you to be a pro kind of marketer over any platform. So बहुत ईजी है इंस्टाग्राम, इसको आप प्रैक्टिस करें और सबसे पहले इसको आप रन करना सीखें अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले किसी नए मॉड्यूल के साथ। मेरे ख्याल में ये जो इंस्टाग्राम वाला मॉड्यूल था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।